मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सीखें। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करके गूगल में टाइप करें वेंटॉय। वेंटॉय की ऑफिशियल वेबसाइट ventoy.net ओपन करें। डाउनलोड पर क्लिक करें। अब आप windows.zip फाइल को डाउनलोड करें। अगेन आप पेज को थोड़ा नीचे करें, windows.zip फाइल को डाउनलोड करें। आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब आप फाइल पर राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर को ओपन करें। डाउनलोड हुई फाइल पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करें। फाइल की लोकेशन दें और ओके करें। एक्सट्रैक्ट हुई फाइल को ओपन करके दिए हुए सेटअप को इंस्टॉल करें और फिर अपडेट करें। अब आपका सेटअप सक्सेसफुल इंस्टॉल और अपडेट हो चुका है। सभी ओपन हुई फाइल को क्लोज करें। राइट हैंड साइड पेन ड्राइव को रखें, लेफ्ट हैंड साइड विंडोज आईएसओ को रखें। ऑल विंडोज आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करके कॉपी करें और कॉपी हुई आईएसओ फाइल को पेन ड्राइव में पेस्ट करें। अब आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक कि आपकी पूरी आईएसओ फाइल पेन ड्राइव में पेस्ट ना हो जाए।
कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। अब जिस कंप्यूटर में विंडोज़ की फाइल को इंस्टॉल करनी है उसमें पेन ड्राइव को कनेक्ट करें और कीबोर्ड की बूट की को प्रेस करते रहें जब तक कि बूट की यूएसबी शो ना हो जाए। विंडोज़ यूएसबी ड्राइव पर क्लिक करें या इंटर करें। अब जिस विंडोज़ फाइल का इंस्टॉलेशन करना है उस पर क्लिक करके स्टार्ट करें। इस तरह आप सभी विंडोज़ फाइल का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।